So permutations and combinations, which you call PNC problems, are generally asked in JEE and they are difficult to understand. So let us see some tricks by which we can easily solve these classic PNC problems. An engineer is required to visit a factory exactly 4 days in the first 15 days of every month, such that no two visits take place on consecutive days. Find the number of possible ways of doing so. यानी एक इंजीनियर को 4 दिन जाना है इन द फर्स्ट 15 डेज ऑफ एवरी मंथ सच दैट नो टू विजिट्स आर ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज, यानी अगर एक दिन विजिट किया तो नेक्स्ट दिन नहीं जाना है. Now over here the easy way is, let us assign a value, say value 1 if he visits the site and 0 otherwise. That means there will be 11 zeros and 4 ones. Total 15 days है, उसमें से 4 दिन विजिट करना है, यानी 4 ones होंगे और remaining 11 will be zeros. Now we want to accommodate 11 zeros. 11 zeros हमें चाहिए, तो 1 कितनी जगह पर आ सकता है? 1 can come at 12 places. In between 0 होगा because 1 0 1 0, because on consecutive days एक के बाद एक आप नहीं विजिट कर सकते हो. तो 11 zeros को अकोमोडेट करने के लिए जो 1 है वो 12 places ले सकता है. Out of those 12 places we want 4. So what are the possible number of ways? 12C4. The problem looks difficult, but the trick is just assign the values and see that what you get the number of ways. So 12C4 is 495 ways. Second classic problem, 5 people A, B, C, D, E are seated in a circular arrangement. If each is given a hat of one of the 3 colors, red, blue or green, then find the number of ways of distributing the hats such that persons in adjacent seats get different colored hats. यानी 5 लोग हैं जो सर्कल में बैठे हुए हैं, सबको एक एक हैट देना है रेड, ब्लू या ग्रीन कलर का, पर 2 कलर के हैट एक के बाद एक नहीं आ सकते. 2 people who are sitting next to each other cannot have the same color hats. अब इसमें क्या है? सर्कुलर अरेंजमेंट है, 5 पोजीशंस है, 3 कलर्स है, सो नो कॉन्सिक्यूटिव कलर इज रिपीटेड. यानी 5 कलर्स में अगर 5 जगह है तो फिर 2 कलर्स विल कम ट्वाइस, पर एक कलर एक ही बार आ सकता है, एक के बाद एक सेम कलर नहीं हो सकता है. यानी एक कलर है वो एक ही बार आएगा, बाकी के 2 जो कलर है वो 2 बार आ सकते हैं. What will be the 3 possibilities? 2 red, 2 blue, 1 green, or 2 blue, 2 green, 1 red, or 2 green, 2 red, 1 blue. हमने देखा 3 possible arrangements है. Suppose we consider one of those arrangements, say 2 red, 2 blue, 1 green. तो वो किस तरह से होगा? ग्रीन एक ही है, तो सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग ग्रीन कलर ए को देते हैं, तो जो रिमेनिंग ब्लू और रेड कलर्स है उसके लिए सिर्फ ये 2 पॉसिबिलिटीज है जो यहाँ पर दिखाई गई है. नाउ जो ग्रीन कलर की एक ही हैट है वो 5 जगह में से कोई भी एक जगह ले सकती है. दैट मीन्स green can take any of the 5 places, so the possible ways for green is 5. But for the remaining 2 colored hats, only these 2 arrangements are possible. Correct? So for each of the 3 possibilities, you have that the one colored hat will take 5 places, and other 2 possibilities for the other 2 colored hats. यानी बेसिकली जो फंडामेंटल थ्योरम है उसके हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल वी गॉट 3 पॉसिबल सेट्स, यानी 3. ईच सेट के लिए जो सिंगल हैट है उसके लिए 5 पोजीशंस, सो इनटू 5. एंड फॉर द रिमेनिंग 2 कलर्ड हैट्स there were 2 possible arrangements, so total number of ways will be 3 into 5 into 2, which is 30 ways. अब एक और तरह का इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. In an examination, there are 20 questions of equal marks and question paper is divided into 3 sections A, B and C.
A student is required to attempt total 15 questions, taking at least 4 from each section. Suppose if a section A has 8 questions, section B and C have 6 questions each, then the total number of ways a student can select 15 questions is how many? टोटल 20 क्वेश्चंस है, उसमें से स्टूडेंट को 15 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। 3 तरह के सेक्शन है ए, बी एंड सी। हर एक सेक्शन में से एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है। नाउ टोटल 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर एक सेक्शन में से 4 क्वेश्चन तो करनी है। दैट मीन्स 4 3 ज़ा 12 क्वेश्चन तो फिक्स्ड है। 15 में से 12 क्वेश्चन फिक्स है, तो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, दैट वी हैव टू चेक। So for the remaining 3 questions from A, B and C 3 sections, what are the possibilities? Remember A has 8 questions, B and C have 6 questions total में। तो ये जो remaining 3 question है उसमें से ऐसा हो सकता है कि A section के ही तीनों तीन वो attempt कर लेता है। That means 3 from A section, so total 15 हो गए, तो B और C में से 0 0। अदर वे इज ए में से वो एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन करता है, बी में से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड सी में से नहीं, तो भी 15 हो जाएगा। 12 + 3 15। इस तरह से दीज आर द ओनली 8 पॉसिबिलिटीज बाय विच ही कैन अटेम्प्ट 15 क्वेश्चंस सच दैट हर एक सेक्शन में से एटलीस्ट 4 है और रिमेनिंग 3 जो है उसके लिए ये 8 पॉसिबिलिटीज है। So now this Excel sheet will make it very clear. टोटल 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ए बी एंड सी 3 सेक्शंस आर देयर। 4 तो हर एक में से करना ही है। रिमेनिंग हमने क्या पॉसिबिलिटी देखी है, 3 0 0 फॉर एग्जांपल, तो 4 + 3 7। बी और सी में से एक्स्ट्रा 0 0, दैट मीन्स 4 और 4 जो मिनिमम है वो, तो इट विल बी 7 4 4। अदर कॉम्बिनेशन विल बी 6 5 4 एंड सो ऑन। Then it is very simple, use the combination formula। 8 में से 7 means 8c4, 6 में से 4 means 6c4 into 6 में से again 4 for the third section। So 8c7 into 6c4 into 6c4 is 1800। इसी तरह से you have the other 8 possibilities, total 8 possibilities। सब में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो सब you have to add all are mutually exclusive events, so you add all of these possible values। So total number of ways to answer 15 questions would be 11376, that means 11,376 ways। क्लास 9 to 12 के लिए मैथ के टॉपिक्स और JEE के इंटरेस्टिंग PYQs एंड ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।